Hello everyone, very good morning. And today we are back again with another daily current affairs session. So today we also have some questions with us after the news analysis. So without any delay, let's just start today's daily current affair. So the first current affair that we have is that ISRO is set to launch 3 satellites today. Okay, so yesterday actually, ISRO has launched 3 satellites, and we are going to see what are these 3 satellites, what is the whole mission, and all the other aspects of this particular news in this particular article. So without any delay, let's just start reading this. The launch of ISRO's second dedicated commercial mission of New Space India Limited. Okay, so this is second commercial mission of New Space India Limited. So you have to remember this name, New Space India Limited. Okay, now we will try to look at the details of this news. The PSLV C-53 will carry on board 3 satellites from Singapore. This is also important, from Singapore. Okay, also try to remember the name, which is PSLV C-53. Okay, now the satellites include DSEO, which is a Singaporean Earth Observation Satellite, then NewSAR, which is Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload. So you have to remember the names. They are very important. बाकी detail में आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, but you have to remember the names. Scoop 1 satellite. So these are the DSEO, NewSAR, and Scoop 1 satellite. They all 3 are from Singapore. Okay, so you have to remember this. Now, what is New Space India Limited? This, in short, we call it NSIL. This is we are going to understand now. So, New Space India is a demand-driven commercial arm of the Indian Space Research Organization, which was established in 2009. Okay, so it is a demand drive commercial arm. Okay, so जो कि इसरो ने ही बनाया है, जो कि established हुआ था 2019 में. So you have to remember the year also. Now this New Space India Limited, which is NSIL, functions under the administrative control of the Department of Space. So it functions under the administrative control of, you have to remember the name, Department of Space, and Companies Act 2013. So the Companies Act 2013 and under the Department of Space. This you have to remember. The key objectives of NSIL is to establish Indian industry to scale up a high technology manufacturing base for space programs through technology transfer mechanism and catering to the emerging global commercial small satellite launch service market. Okay, so इसके जो key objectives हैं वो क्या है? So the key objectives are that NSIL is trying to establish Indian industry so that we can have a high technological manufacturing base, especially for space programs. Okay. Now, this NSIL is the second commercial initiative of ISRO after Antrix. So first one was Antrix. Okay. You can remember this. This is important. And the second one is this.
Okay, now what are the key functions of NSIL? This is what we are going to teach now. NSIL will be the nodal agency for carrying out Polar Satellite Launch Vehicle, which is PSLV, productionization, and will be responsible for producing, assembling, and integrating the launch vehicle. So, the launch vehicle होता है, उसको they will be responsible for producing, फिर उसको assemble करेंगे, integrate करेंगे, and जो launch vehicle है उसके. So, this is actually the nodal agency for all these. Now, manufacturing of small satellite launch vehicles. So, Indian industry partners. What is another function? Is to manufacture small satellite launch vehicles, which is SSLV. Okay. So, in one class, I'll also tell you the difference basically. Okay. So, it is responsible for providing launch services to global satellite customers. So also, it's not just related to India, but they're also to provide launch services at a global level. Building satellites meant for Earth observation, communication, and providing in-orbit delivery services for customers. Self-explanatory. Providing SATCOM services, including leasing of space segment capacity. So, what all they will do? जो SATCOM services होती है, जो कि leasing of space segment capacity, all these they will also provide. Now, transfer of technology and spin-off technologies of Indian industry. Okay. So with this, we come to an end to this particular small news of ISRO. And we also try to understand New Space India Limited, what are the key functions. And with this, we come to the another very important news, which talks about the vice presidential poll on August 6th. Now we will try to have a look on this particular news. So the Election Commission has announced that the election to the post of the Vice President will be held on August 6th. As Ms. M. Venkaiah Naidu's term was coming to an end on August 10th. Because August 10 पे जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है. तो हमें नए वाइस प्रेसिडेंट का election karna padega. Okay, so in this particular news, we are going to see about what all things we need to have in a particular person so that he can be nominated as vice president, and then all the other things, kya eligibility hai, then kaise elections hote hain vice president ke. So all that we are going to see in this particular article. Okay. So about Vice President of India. So Vice President is the deputy to the head of the state of the Republic of India, which is the President of India. So he is actually the deputy. And who's the head? The President. He or her office is the second highest constitutional office after the President, and ranks second in the order of precedence and first in the line of succession to the presidency. So this you have to understand कि जो vice president होते हैं, he is the second highest constitutional officer, he or she. And president के बाद, this person who will be the vice president, he is the second senior most person. Then ये जो अगर president, in some cases if president is not there, then he can be the successor of for the president. Okay? Now the vice president is also a member of parliament as the ex officio chairman of Rajya Sabha. जो
वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, he or she is also the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman की मतलब by the virtue of, because you are something, you are getting something. So it's like कि आपको कोई चीज मिली है, आपके पास कोई चीज है, उसकी वजह से आपको कोई एक और चीज मिल गई. So it's like that कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, इसलिए आप राज्यसभा के भी ex officio chairman बन गए. Okay, chairperson rather. Qualifications. What are the qualifications required for a person to have before becoming the vice president of the country? As in the case of the president, to be qualified to be elected as vice president, a person must have citizen होना चाहिए इंडिया का, 35 एज होनी चाहिए कम से कम, कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं नौकरी किसी तरीके का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay. And unlike in the case of the president, where a person must be qualified for election as a member of the Lok Sabha, the vice president must be qualified for election as a member of the Rajya Sabha. What they are trying to say is कि president के election में तो होता है कि जो person है वो qualify होना चाहिए कि वो लोकसभा का member बन सके. And in the case of vice president, लोकसभा की जगह राज्यसभा का member. Okay. So this is the difference. थोड़ा काफी सिमिलर लगता है बट थोड़े से डिफरेंसेस है. सो जो डिफरेंसेस है यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन दैट. ओके, so try to have a deeper look at that particular things. The difference is because the vice president is to act as the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. As I told you कि जो पहले लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही और शी इज टू बी एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, तो इसीलिए उनके ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लोकसभा. So this is the reason. Okay. Role and responsibilities. So what are the roles and what are the responsibilities that vice president of the country has to play? When a bill is introduced in Rajya Sabha, the vice president decides whether it is a money bill or not. Okay. So जब भी कोई bill introduce होगा Rajya Sabha में, तो solely it will be the responsibility of vice president कि वो bill मनी बिल है या नहीं है, ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे. ओके. देन इफ ही और शी is of the opinion that a bill introduced in Rajya Sabha is a money bill, he shall refer it to the Speaker of the Lok Sabha. And after the decision, if he or she comes to decide that okay, this is a money bill, then what will happen? They will have to refer it to the Speaker of the Lok Sabha. Okay. The Vice President also acts as the Chancellor of the Central University of India. This is very, very important. ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. The Vice President also acts as the Chancellor of the Central Universities of India. इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके चांसलर कौन है? Vice President of India. This is very important. Have been asked in so many exams. Okay. Now, what is the election procedure that we will try to understand? So, Article 66 of the Constitution of India states the manner of the election of the Vice President. So, Article 66, yaad rakhna, it is related to the election of the Vice President. The Vice President is elected indirectly by the members of an electoral college consisting of the members of both the houses of the parliament and not the members of state legislative assembly. Very important. Listen to me very carefully. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं
और ये जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं, दे आर फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट इसमें कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The election is held as per the system of proportional representation using single transferable vote. Okay, so इसमें क्या होता है, ये बहुत डिटेल में मैं आपको किसी दिन किसी क्लास में लेकर आऊंगी, दैट व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे क्लास में. बट फॉर नाउ यू कैन इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे एक पेपर है एंड इफ देयर आर 4 ऑप्शंस, जो 4 लोगों के नाम है, एंड उसमें से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को बहुत ही कम अगर वोट्स मिले हैं, तो देन अगर वो देन द फर्स्ट वन विल बी रिमूव एंड उसके जितने भी होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द नेक्स्ट वन एंड वो ऊपर आ जाएगा. So it's something like that. Detail में I'll tell you in one of the lectures. बहुत ही जल्द. The voting is conducted by Election Commission of India via secret ballot. Okay. The Electoral College for the poll will comprise 233 Rajya Sabha members, 12 nominated Rajya Sabha members, and 543 Lok Sabha members. तो वो जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा पोल के लिए, जो लोग वोट करेंगे, वो उसमें कितने लोग होंगे, 233 राज्यसभा के मेंबर, 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के स्पेशल फील्ड्स के, एंड देन 543 लोकसभा मेंबर. The Lok Sabha Secretary General would be appointed the returning officer. This is important. जो लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल होंगे would be appointed the returning officer. Okay. So political party cannot issue any whip to their MP in the matter of voting to the vice presidential election. Political parties का इसमें कोई भी they do not have this right to issue any kind of whip अपने MPs को वोट करने के मैनर में कि इसको वोट करना है उसको वोट करना है. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. इट्स वेरी इंडिविजुअल काइंड ऑफ थिंग. ओके. नाउ हाउ अ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. The Constitution states that the Vice President can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority. What is effective majority? Majority of all the 10 members. Effective majority जितने भी लोग हैं उनमें से जितने प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर्स हैं वहां पे, उन सब में से ज्यादा मेजोरिटी वाले को जो है वो उससे रेजोल्यूशन पास होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जा सकता है या नहीं. And agreed by the Lok Sabha with a simple majority. So Rajya Sabha में because he is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha, तो वहाँ पे effective majority रहेगी और जो लोक सभा रहेगी वहाँ पे simple majority से पास हो जाएगा. Okay, so all this is stated in Article 69B. But no such resolution may be moved unless at least 14 days notice in the advance has been given. So कम से कम 14 दिन का जो है advance notice देना पड़ेगा. Then only this resolution can move ahead. Otherwise, no. Notably, the Constitution does not list grounds for removal. So Constitution में कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं दिए गए स्पेसिफिक कि जिस पर रिमूवल किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट पर. No vice president has ever faced removal or the deputy chairman in the Rajya Sabha cannot be challenged in any court of law as per Article 122. Okay? So अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है. कोई जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको किसी को भी रिमूव नहीं किया गया. So with this, we come to an end to this particular news.
Now we have another important news. We will try to understand this. This is important from your economics perspective. What is the news? Let's try to read and understand. 63,000 farm co-ops to be digitalized. Now, what is this news? We will try to understand. डिजिटाइज के बारे डिजिटलाइजेशन करने के बारे में बात की जा रही है. क्या क्या बात की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि फार्मर्स से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, ओके, क्रेडिट से रिलेटेड है. ऑल दोस वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. So the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a proposal to digitize around 63,000 primary agricultural credit societies. Okay, so we will try to understand that what are these primary agricultural credit societies. So PACS, primary agricultural societies, ये जो societies है, credit societies, is a basic unit and smallest cooperative credit institution in India. So you can have a look that cooperative credit institution है, उसमें जो रूरल cooperative credit institution है एक तरफ we know urban cooperative banks होते हैं जो बड़े होते हैं, and then ये जो रूरल cooperative credit institution होते हैं, there they have short term structure and long term structure. तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, उसमें वन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में. इन 1904 the first primary agricultural credit society was established. So can you imagine 1904, 100 years से भी ज्यादा कम है. It works on the grassroots level, ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल पे it used to work. So PACS is the final link between ultimate borrowers, that is rural people on one hand, and the higher agencies जैसे कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द अदर. सो जो छोटे छोटे बोरोअर्स होते हैं, जैसे किसान हो गए, कोई मर्चेंट्स हो गए, ऑल दोस एक साइड पे वो होते हैं जो लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, एंड दूसरी तरफ वो बड़ी एजेंसीज होती हैं जो कि देती हैं, जैसे कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए, आरबीआई हो गया, तो ऑल होती हैं. ओके, now who regulates PACs? So we will call it a PACs in short. Okay. The PACs are registered under the Cooperative Society Act and also regulated by the RBI. They are governed by the Banking Regulation Act 1949. Very, very important. कि PACs जो होते हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and banking law 1965. तो ये दोनों याद रखने हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज 1965. ओके, so various objectives of PACs: to raise capital for the purpose of making loans and supporting members' essential activities. तो क्या एक्चुअली इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई कैपिटल जो है वो बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जा सके और जो लोकल मेंबर्स हैं उनकी एसेंशियल एक्टिविटीज को बूस्ट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके. To collect deposits from members with the goal of improving their saving habits. लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना ताकि उनसे डिपॉजिट लेकर उनको एक ये चीज सिखाई जा सके कि जो सेविंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल. सेविंग्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. To supply agricultural inputs and services to the member at a reasonable price. क्या एक और वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल सर्विसेज और इनपुट्स प्रोवाइड करें जो कि मेंबर्स हैं बहुत ही कम दामों पे. To arrange for the supply and development of
improved breeds of livestock for members. So जो better supply and development होना चाहिए ताकि जो इम्प्रूव ब्रीड्स हैं एंड लाइवस्टॉक हैं वो पहुंचाई जा सके, उसकी सप्लाई अच्छी तरीके से पहुंचाई जा सके और लोगों को मिल सके. To make all necessary arrangements for improving irrigation on land owned by members. और क्या करना है, इरिगेशन जैसे रिलेटेड जितने भी जरूरी अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए वर्क करना है. टू एनकरेज वेरियस इनकम जनरेशन एक्टिविटीज थ्रू सप्लाई ऑफ नेसेसरी इनपुट्स एंड सर्विस. इनकम जनरेशन की जो एक्टिविटी है उसके लिए इनकरेज करना है, उसके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड करना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह सकें. ओके okay, so we have seen all these things. Now we have seen the objective. Right now we are going to see now the functions of PACS. So as a registered cooperative society, PACS have been providing credit and other services to their members. ठीक है, क्रेडिट जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इनका क्या काम है, छोटे लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करना लोगों को. बैंक्स टिपिकली ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स. सो जो मेंबर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. व्हाट आर द इनपुट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉनेटरी और इन काइंड कंपोनेंट्स. सो जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए होती है, monetary facilities, all those they provide करते हैं. Agriculture inputs for hire, agriculture implement for hire. So जो भी कोई implements वगैरह, औजार वगैरह, equipments वगैरह चाहिए agriculture से related, तो they also hire it. Storage space भी provide करते हैं कि जैसे मानो किसी के बड़े खेत है, उससे अच्छा हार्वेस्ट हुआ है ना, they need to store it. So that will also be provided by PACS. Who can form PACS? Now this is a question कि PACS actually बना कौन से लोग सकते हैं. Primary agricultural credit society can be formed by a group of 10 or more people or from a village. So एक प्राइमरी ये जो हमारा ग्रुप होता है पैक्स का, ये एक छोटे से किसी भी जगह के, किसी गांव के 10 या 12-15 लोग मिलके बना सकते हैं. The society's management is overseen by an elected body. So जो इसका पूरा मैनेजमेंट होता है, this is overseen by an elected body. एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो पूरा लुक आफ्टर करती है इसके मैनेजमेंट को. The membership fees is low enough that even the poorest agriculturalist can join it. और इसकी जो मेंबरशिप फीस होती है वो इतनी ज्यादा कम होती है कि सबसे गरीब किसान भी इसको ज्वाइन कर सकता है. Members of the society have unlimited liabilities, which means that each member assumes full responsibility for the society's entire loss in the event of its failure. So क्या इसका मतलब है कि हर एक मेंबर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर सोसाइटी जो बनी है उसमें कोई भी लॉस होता है तो. नाउ इसको कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है कि भाई पैसे देने हैं, कुछ सामान प्रोवाइड करना है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो कहाँ से ये सब दिया जाएगा. फॉर दैट दे नीड टू हैव मनी. हाउ विल यू कैपिटलाइज? सो दैट वी आर गोइंग टू सी. The primary credit society's working capital is derived from their own funds, deposits, borrowing, and other sources. So कैसे वर्क करेगा? जो भी मेंबर्स होंगे वो अपनी खुद की फंडिंग, डिपॉजिट्स, बोरोइंग और इन सब सोर्सेस से दे विल कैपिटलाइज इट. ओके. Then the next point is share capital, membership fee, and reserve funds are all part of the company's own funds. So जितने भी जो भी मेंबरशिप फीस होगी, जैसे किसी ने नए किसान ने ग्रुप ज्वाइन किया तो उसकी कुछ मेंबरशिप फीस होगी
ज्वाइंट होने के लिए, तो वो सब भी, और जितना भी जमा हुआ पुरानी पूंजी होती है, शेयर कैपिटल होती है, ये सारी उस कंपनी का ही फंड माना जाता है, सोसाइटी का। Deposits are made by both members and non-members. So deposit ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग members हैं they can only deposit, but the people who are not the member they can also deposit. Now borrowing are primarily made from central cooperative banks. अब अगर कुछ borrow करना है, पैसे borrow करने हैं जरूरत के लिए, तो ये पैक्स के लोग कहाँ जाएंगे? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ओके, वहां से दे विल borrow. नाउ अब बात ये आती है कि इसका डिजिटलाइजेशन क्यों करने की जरूरत. सो पैक्स अकाउंट फॉर 41%, which is 3.01 crore farmers of the Kisan credit card loans given by all entities in the country, and 95% of these KCC loans, which is 2.95 crore farmers through PACs, are the small and marginal farmer. तो जो टोटल 41% जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, उनमें से 95% जो है वो पैक्स के थ्रू ही दे हैव टेकन दी लोन्स. सो इसीलिए दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, इसलिए इट हैज बिकम वेरी नेसेसरी टू डिजिटलाइज. The other two tiers, while state cooperative banks and district central cooperative banks, have already been automated by the NABARD and brought on common banking software. So, जो ये state cooperative bank हैं and district central cooperative banks हैं, they are already digitalized. Okay? तो अब इसको भी कर देना चाहिए. This is what the argument is. Majority of PACs have so far been not computerized and still functioning manually, resulting in inefficiency and trust deficit. So what will happen, because manually work कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हेरफेर होने के चांसेस हैं, फंक्शन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता. अगर कंप्यूटराइज चीजें हैं तो इट इज वेरी मच क्लियर कट, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती उसमें. बट मैनुअली जो चीजें हैं उसमें फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, कुछ इनसफिशियंसी की भी चीजें रहती हैं. जो चीजें कंप्यूटर बहुत जल्दी कर सकता है वो मैनुअली होने में बहुत समय लगता है. सो ऑल दीज आर द रीजंस दैट व्हाई वी नीड टू हैव इट in a digitalized form. Okay. Now, what is the significance of keeping it digitalized? Computerization of PACs will increase their transparency, reliability, and efficiency, and will also facilitate the accounting of multi-purpose PACs. जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि कंप्यूटराइजेशन से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिलायबल रहेगा, ज्यादा विश्वसनीय रहेगा और इफेक्टिवली काम हो जाएगा. जो चीजें मैनुअली शायद 15-20 मिनट लेंगी वो कंप्यूटर से कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा. एंड विल ऑल्सो फैसिलिटेट द अकाउंटिंग ऑफ मल्टीपर्पज पैक. सो काफी मल्टीपर्पज ये हो जाएगा, एक ही चीज से रिलेटेड नहीं रहेगा. इट विल बिकम मल्टी डायमेंशनल, वी कैन से. So along with this, it will also have PACs to become a nodal center for providing services such as direct benefits transfer, interest subvention scheme, crop insurance scheme, and input like fertilizers and seeds. So PAC जो है, it will kind of digitalization will help PAC to become the nodal center where they can have they can work in various services area, जैसे कि direct benefit transfer हो गया, crop insurance scheme हो गई, and बाकी fertilizers या seeds से related जो चीजें हो गई वो सब ये provide कर सकते हैं. Now, with this, we come to end to our today's discussion, and we have some very important questions which we are going to see now. Let's just try and understand. Okay. The farmers are provided credit from a number of sources for their short and long-term needs. The main source of credit to the farmers include
क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया कि जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट लोन दिए जाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे वो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसे क्रेडिट्स ले सकते हैं। एंड ये जो क्रेडिट है उनके सोर्स क्या है फॉर फार्मर्स? A, the primary agricultural cooperative society, commercial bank, RRB, regional rural bank means RRB, and private money lenders. B, the NABARD, RBI, commercial bank, private money lenders. ठीक है? C, the district central cooperative bank, the lead bank, IRDP and JRY. The large-scale multi-purpose Adivasi program, DCCB, IFCO, and commercial banks. Okay, so which one is the right answer? This you have to. This is a question in which you can have common sense and try to answer this. Because if we see the second option, तो NABARD, RBI, commercial bank ये नहीं आए. Okay, commercial bank is there आ सकता है, but directly RBI से तो they are not going to. RBI की कोई एजेंसी होगी छोटी जो कि क्रेडिट करेगी. Okay, then district central cooperative bank भी नहीं होगा because they are going to work in the districts. Okay, and तो C भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा. D में क्या है? मल्टीपर्पज आदिवासी प्रोग्राम, ये स्पेसिफिकली जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए है और इफको वगैरह भी इससे रिलेटेड नहीं है. सो नाउ व्हाट विल बी द राइट आंसर? विद दैट विल बी A. So A will be the correct answer for this particular question, that the primary agricultural cooperative societies, commercial bank and regional rural bank and also private money lenders. So these are the sources of credit to the farmers. Now we will try to see what are the other questions that we have for today. Okay, so we have 3 statements in front of us. We will try to read them, understand them, and then we will try to answer this particular question. So statement 1 is marine exports from India have witnessed a decline in the last 3 years owing to the disruption caused by the COVID-19 pandemic. तो ये बात कर रहे हैं कि जो मरीन एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हो गया है लास्ट 2 साल में ड्यू टू कोविड. Then second is frozen shrimps remains the major export item from India, both in terms of quantity as well as value. So frozen shrimp क्या बोलते हैं, केकड़ा जो होता है, झींगा. ओके, सो ये बोल रहे हैं कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू. The third statement is the US is the topmost importers of Indian seafood, both in terms of value as well as volume. Now we have these options in front of us. You have to find the correct one. Okay, so the correct one is option 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and 1, 2 and 3. So which will be the right answer for this particular question? The right answer will be for this particular question is B. Why B? Because only option 2 and 3 are correct. Let's just try to analyze from the explanation. So statement 1 is not correct. The marine export from India have witnessed growth and have recorded an all-time high in financial year 21 and 22. So option 1 is totally wrong, and hence this will not be the case. So if you already knew that option 1 is wrong, then you could have used the elimination method, and then A option, C option and D option तीनों eliminate हो जाते हैं and B would be the right answer. So ऐसे question में अगर आपको एक दो options भी पता है सही है या गलत है, तो there is high chances that you can make
that answer correct by using elimination method. So what are the other two statements? Let's try to understand. So statement 2 is correct because frozen shrimps have remained the major export item in terms of quantity and value both. तो ये जो second statement है ये बिल्कुल correct है. Now statement 3 is correct because the US is the largest importer of Indian seafood both in terms of value as well as volume. So US में सबसे ज्यादा import किया जाता है जो इंडिया का seafood है, value और volume दोनों के term में. Now with this we have come to an end to our today's discussion. I'll meet you very soon in the next video, and till then I hope you people will keep studying and revising things, and I'll see you tomorrow with another daily current affairs session